I can see one viewer has joined. Hi Meena, how are you? We'll just wait for 2 to 3 minutes so that other people can join the live too. And then we'll start with the session. Those of you who are joining this live, just comment down a hi so that I know who all have joined this live. Hi Neha, how are you? How are you doing? Good to know you're good. We'll just wait for 2 more minutes and then we'll start with the session. Nice to see you. Nice to see you too. Just 2 more minutes and then we'll start with the session. Okay, so I think we should start and let other people join in later. So in all the live sessions, so first of all, welcome to the live session for Resin Art with me, Ishika, on vshow.live. And for a number of live sessions for now, we have learned how to mix resin, how to use different types of resin, and what all to mix in resin, in what quantities to mix in resin, how to do all of that. But what today, if as you can see, I'm not wearing any apron and I'm not even wearing any gloves. So today what we're going to talk about is something very basic yet very important part. हमने सब कुछ सीख लिया कि रेजिन बनाने के लिए ये करना है, ये करना होता है, किस कौन सी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या डूस एंड डोंट्स होते हैं. मगर but what today we'll be doing is that as a beginner, of course, resin art is one of the most expensive art works. Like resin sources cost a lot. Like if you will even go out buying resin for making just a small coaster, that can easily cost you around 2,500 to 3,000 bucks. But we want that as a beginner, we want to make resin art to at least learn, to at least make our initial mistakes, and for that we cannot afford so much of money. So today I'll be talking about the resin products, their alternatives, their reasonable alternatives, or things that we use for resin that are easily and very easily available to us at our home. So first of all, let's start with the main thing, resin itself. Now one thing in resin art that you cannot compromise on is the resin itself.
Now, of course, different brands cost different. You can find brands like Oitra, Hexon, Art Pavilion, the one which I use. Then there's one Art. The name of the brand is just Art. That Art resin. So for initial, of course, you cannot compromise on the quality of resin. So top 4 brands that I would recommend to you. First is Art Resin. Top one will be Art Pavilion. Art Pavilion and Art Resin, these two are separate brands. So my personal favorite one I use and I'm very sure about is Art Pavilion Resin. Now other 3 brands that if you want to go that you can go with. Second one is Hexon. Hexon has another level resin, but the only problem with that resin is, for example, in other brands resin, we mix resin into 1:1 ratio, 2:1 ratio. When it comes to Hexon resin, you have to mix the resin into 3:1 ratio, which is, according to me, a bit more confusing, and Hexon costs even more as compared to all the other brands of resin. So yes, if you want to invest अपना costing बढ़ाकर आप definitely you can go in for Hexon resin. It's another amazing India का top resin वही है. Then third number पे it's Oitra resin. It also provides very good quality of resin. Then is the Art resin. Now for initial, when we're a beginner, we can obviously not compromise on the quality or the brand of a resin. What we can compromise is on, instead of buying these 1000 grams resin bottle, there is another small, I guess that is, some brands provide 500 grams and some provide 250 grams of resin. So for that, for the beginner level, you can buy that 500 or 250 gram resin. Same, you'll get one big bottle that is of resin and one small one that will be of hardener. Now second of all, now you have resin. Now second thing that you need is a weighing scale. Now you cannot really compromise on weighing scale. You will have to buy one. Some people, what they do is they also buy a measuring volume silicone cup. Trust me, you feel that investing into that is a good thing, but it is not, because once you've mixed resin into it, you'll pour your resin into your mold. Then what will happen is, if there and then you have to make another product, you cannot, because that will have some, leftovers of resin and some leftovers of hardener. So what will happen is, when we mix the next proportion of a resin, some leftover proportions will disturb the proportions of our newly poured resin and our resin art will get destroyed. One thing I would personally want you guys to invest is a weighing scale. Now, what do we pour a resin into? Very, 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 very cheap option. Coffee glasses. Small coffee glasses or paper glasses. I will not recommend you those plastic glasses, because obviously plastic is not a sustainable option, and I wouldn't promote you guys using plastic. Still, if you want, yes, it's a very feasible option. Now, for pouring resin, the other style of cup that comes in, that you will find in a number of online resin art tutorials, will be a silicone cup. Now, I wouldn't recommend you using a silicone cup, because from my personal experience, I have faced a lot of challenges with it. First of all, it's very, it can just get pressed while you're holding it. So first, that drawback. Second of all, resin in silicone, once, like for example, if you can see, there is still some resin inside it. Now what is happening? This is already hardened over a period of 24 hours. So what I'll do is I'll simply throw it. One paper cup costs around what? 0.50 paisa or 1 rupee or 2 rupees something. That's it. When you'll buy a silicone cup, what will happen is, after 24 hours, it will dry. Okay, one perk about it is that you'll just push it out and this part, the hardened part, will come out. But some remains of it will still be sticked in the cup.
good information. Thank you, Neha. This all information is for you guys. So you can just simply push out, and that part of hardened raisin will come out. But the small, very, very, very small remains of those raisin will still be sticked inside the cup. Again, when you pour your new and fresh raisin, what will happen is those hardened parts will get mixed into your raisin. Now imagine if I have, supposedly this is one of the raisin art we made. So I had stick my photo, and when I'll be pouring that silicone cup mixed raisin onto this photo, what might happen is that hardened part of the previous lot of our raisin, that might get on the top of our photo, and it hides any one part of our photograph. Supposedly, what if accidentally it gets into the part of this guy's eyebrow? Imagine how weird that would look, and it would make it look very funny, and that would somehow spoil your raisin art, and that is something that we do not want. So my personal advice is, do not use a silicone cup, use paper cup or plastic cup. Not a sustainable option, but okay. Second of all, to mix raisin, what I use is ice cream sticks. Ice cream sticks, around 30 sticks pack, costs you around, I guess, 15 rupees. Again, ice cream sticks ka alternative is also a silicone stick. Will not recommend you to use it for the similar reason, that is, you'll have to wait for the stick to dry for 24 hours, then remove the raisin from it, and then use it again. So again, no option. Do not use that. Now, third thing, how and when and where and in which quantity should we invest upon our molds. ना अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि हाँ हमें रेजन आर्ट का बिजनेस शुरू करना है, हमें रेजन आर्ट करना है, हमें जो जो मोल्ड अच्छे लगे हम सब उठा के ले आए. नो, यू विल नेवर मेक दैट मिस्टेक. थिंक ऑफ रेजन आर्ट. देखो कि अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग वेबसाइट्स क्या रेजन आर्ट कर रही हैं. जो सब कर रहे हैं ना, वो मत करो. फाइंड समथिंग न्यू. Find your own niche. Create, bring that creativity outside. Creativity, of course, is not a tap that it will just flow whenever you want. But think. Find your niche. Think something unique. So, how I found my niche was, a lot of times you would have seen it on Instagram. What is currently going on right now is those vintage frames. उसमें क्या होता है, ब्लैक चार्ट पेपर, नॉवल का शीट, फोटो लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, फ्लावर्स लगा दिए, विंटेज शीट फ्रेम बंद करा, दे दिया. What did I do? I incorporated that same thing into resin. ब्लैक चार्ट पेपर लगा दिया, नॉवल का पेज लगा दिया, फोटो लगा दिया, फ्लावर लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया. This is how I found my niche. ऐसे ही कहीं से भी इंस्पिरेशन लेके अपनी नीश करो, और सबसे पहले सिर्फ उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करो. जब when you start getting profits out of, you've covered your cost, when you start getting profits out of your very few initial products, then incorporate new products. Now I am someone who is now very less active on her Instagram profile, the Resin Art one, due to my exams and everything. But अभी तक मैंने जितना पोस्ट कर रखा है ना, वो सब बिका है. क्यों? क्योंकि मैंने वही 5-6 चीजें ही हमेशा डाली हैं. फॉलोअर्स से ज्यादा मेरे ऑर्डर्स रह चुके हैं. क्यों? क्योंकि वो एक नीश पकड़ रखी है मैंने. वर्ड ऑफ माउथ से भी बिजनेस स्प्रेड होता है, बहुत चीजों से होता है. सो मेक श्योर कि सबसे पहले नीचे चीजें पकड़ो, get earn out of those things, and then like these lockets that we had made. Till now I haven't launched these on my own page. I haven't. Why? Because टाइम दो. पहले एक प्रोडक्ट को फेमस होने दो. अपने पहले एक प्रोडक्ट की रील्स डाल के उसको थोड़ा वायरल करो, उसके ऑर्डर्स आने दो. Then invest upon expensive things. Now why am I saying this is expensive? This golden outline border mold, this costs around 15 rupees one piece. This flower, one pressed flower costs you around 26 rupees अगर आप किसी होलसेल वाली जगह से लो. If you'll buy resin pressed flowers from a retail one, वो आपको 450 का एक पैकेट देंगे या 650 का एक पैकेट देंगे.
उसमें सिर्फ 15 फ्लावर्स होते हैं, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 फ्लावर फॉर 50 रुपीज। और मैंने इसमें 2 फ्लावर्स आधे आधे काट के डाल रखे हैं, आधे भी नहीं, 75%। तो 25% जो फ्लावर मेरा कटा वो तो वेस्ट हो गया ना। सो नाउ अगर मैं इसके अंदर क्या लगा है, यूवी रेजन। यूवी रेजन इज वेरी एक्सपेंसिव। इतनी सी बॉटल, सिर्फ इतनी सी बॉटल, दिस कम्स फॉर अराउंड 900 bucks। यूवी लाइट, सब में इन्वेस्टमेंट गया मेरा। नाउ इफ आई कैलकुलेट माई बेसिक कॉस्ट, मेरा इसी का बेसिक कॉस्ट 100 to 120 to 150 पहुंच गया। सो मेक श्योर कि पहले नॉर्मल चीजों में इन्वेस्ट करके उनसे यू अर्न प्रॉफिट एंड देन ओनली यू इन्वेस्ट इनटू थिंग्स लाइक दीज। या फिर अगर ऐसे नहीं करना, यू कैन डू इट वाइस वर्सा। आप अपना नीश ही रेजिन पेंडेंट्स और इस सब को पकड़ो। आपने इसको अपना नीश पकड़ा, स्टार्ट सेलिंग दीज। सबसे ज्यादा इफ आई थिंक कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी चीज में तो वो रेजन बुकमार्क्स में और रेजन पेंडेंट्स में है। हर लड़की को एक्सेसरी चाहिए, हर लड़के को आजकल एक्सेसरी चाहिए। ठीक है, लड़के ऐसे एक्सेसरीज नहीं पहनते, बट नाउ डेज इवन इफ यू सी गाइज आर वेरी इंटरेस्टेड इन टू ऑल दिस थिंग्स, नेल पेंट्स एंड लॉकेट्स एंड एवरीथिंग खरीदते हैं, वो भी खरीदते हैं। पेंडेंट्स एंड बुकमार्क्स, पर्सनली व्हाट आई थिंक इज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिन। एंड ऑब्वियसली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी हैं, बट इफ यू होल्ड दिस योर नीश, स्टार्ट विद दिस, और जब इससे कमाओ तो उन चीजों पे शिफ्ट हो। सो यू नीड टू होल्ड अ नीश एंड यू नीड टू डिसाइड कि हाँ पहले इससे कमाना है फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि एक एक फोटो हर चीज की डालती, बिक कुछ भी नहीं रहा है। सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक while doing resin art. Now, tweezers. You can buy them very easily for 15 rupees from any fabric shop. वो लोग ये देते हैं, these are used for even picking up sequences and sticking it to the clothes. तो खरीद लो, basic option. Otherwise, if you want to invest higher, you can easily invest into silicone brushes very easily. ज्यादा महंगे नहीं आएंगे, 100 to 150 के आएंगे, बट स्टिल बिगिनर लेवल के लिए इसको खरीदने का कोई फायदा नहीं है। I would recommend buy 2 tweezers, one with the pointed turned one and one with a plain one. Use this to adjust your things inside the resin. Use this to pick something and put it inside the resin. Make sure once you've dipped your tweezer into the resin, you've adjusted your flowers or photographs or anything. Make sure as soon as you get this outside of your resin, clean it. सबसे पहले क्लीन इट, वरना क्या होगा, रेजिन का लेयर बनता जाएगा, योर ट्वीजर्स एक हफ्ते के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे। सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। सेकेंड थिंग, प्रिसीजन नाइफ। प्रिसीजन नाइफ आता है, एक नाइफ आता है, साथ में 5 ब्लेड्स आते हैं। कैन वेरी अप टू 150 bucks to 300 bucks, डिपेंड्स अपॉन कौन सा ब्रांड खरीद रहे हो, कैमल का खरीद रहे हो, फैबर कैसल का खरीद रहे हो। What's the use for it? It is very 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 important. हमारा किसी भी रेजिन आर्ट का बाहर का हमारे मोल्ड के ऊपर रेजिन ओवरफ्लो हो गया, एक्स्ट्रा रेजिन अलग से एक पतली सी लेयर ऐसे आगे से गोल बन रही है, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे स्क्रैप ऑफ करेंगे ना, वो एक्स्ट्रा रेजिन कट के बाहर आ जाएगा। बेसिकली दिस इज अ सिजर फॉर रेजिन. Can't make it any more easier for you guys to understand. A scissor for resin, very important. अब 2 चीजें जिनमें आपको डिसाइड करना है कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है इनिशियल में. बफर 2 टाइप के होते हैं. दिस इज एन इलेक्ट्रिक वन, आवाज आ रही होगी, दिस इज रोटेटिंग, दिस इज एन इलेक्ट्रिक वन. ये बहुत स्मूथली चलता है, ऐसे कुछ नहीं होगा. ये बेसिकली जो हमारा नेल आर्ट होता है ना, जैसे ना ये इसको बफ करने के लिए होता है, बट मतलब I'll tell you, half the products of resin art is very similar to half the products of nail art. UV lamp nail art में यूज होता है, resin art में यूज होता है. नेल आर्ट में यूज होता है, resin art में. ये भी नेल आर्ट का ही है. ये किसका है? ये कलर बार का ही है. I have color bar and I have another sugar one, nail filer वाला. माई पर्सनल एडवाइस, नेल फाइलर वाला मत यूज करना, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. जो रेजिन प्रोडक्ट बनाओगे, यूज करना है कलर बार का ये वाला करना. थर्मोकॉल के चारों साइड्स पे ऐसी शीट्स लगी होंगी,
स्टेप वाइज लिखा होगा, शेप 1, शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4. माई पर्सनल रिकमेंडेशन, ये भी कुछ 60 to 70 bucks से कम का नहीं आएगा एक बारी में. ये कुछ 150 to 300 का होगा. इसमें बहुत डिफरेंट टिप्स आती हैं. कुछ नहीं करना, स्क्रैप ऑफ कर लिया रेजिन. ऊपर की साइड बहुत ही पॉइंटी है. इफ आई एम पुटिंग माई फिंगर, दे आर स्क्रिपिंग माई फिंगर. यू कैन सी अ मार्क ओवर योर. कुछ नहीं करना, इसको लेना है बहुत धीरे से, हल्के हाथ से. आई गेस यू कैन हियर द वॉइस. बहुत हल्के हाथ से कर दिया, खत्म. इन्वेस्टमेंट लगेगा बिगनर लेवल पे, कोई जरूरत नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने में. घर का नेल फाइलर होता है, उसको यूज कर लो. वो भी नहीं है, सैंड पेपर की A4 साइज शीट आती है 20 रुपए की. यूज दैट नाउ. सैंड पेपर की शीट आती है, उसको यूज कैसे नहीं करना है. यहाँ पे कोई भी सरफेस पॉइंटी होगा ना, ये यूज होगा ना, ये यूज होगा ना, सैंड पेपर यूज होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा. रफ व्हाइट कलर दे देगा, फिर से रेजन की कोटिंग करनी पड़ेगी, आपका काम डबल हो जाएगा. तो ये नहीं करना है. सिर्फ जो हमारी एजेस पॉइंटी होती हैं, ओनली एंड ओनली उसके ऊपर यूज करना है. सैंड पेपर को उसके ऊपर यूज करके मेक श्योर कि सैंड पेपर से अगर आप उसको रब करके इसको स्मूथ कर रहे हो ना, यहाँ पर ना आए. यहाँ पर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बैक साइड कोई नहीं देखता. मेक श्योर कि सिर्फ एजेस पे जाए और आपकी एजेस स्मूथ हो. ये गलती मत करना. नाउ थर्ड थिंग, इन्वेस्टिंग अपॉन कलर्स. वेरी 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 एक्सपेंसिव कलर, स्पेशली लिक्विड वाले तो बिगनर लेवल में कभी खरीदना ही मत. दिस वन बॉटल विल कॉस्ट यू अराउंड 150 to 175 रुपीज. डू नॉट बाय. इनिशियली पाउडर कलर खरीदो. दिस यू इफ पाउडर मे बी इफ यू सी द MRP, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रीड इट और नॉट. इट्स 199, बहुत हाई है. बट अगर पाउडर कलर 3 कलर साथ में लोगे, आपको बहुत आराम से 60 to 70 पर कलर मिल जाएगा. सिर्फ 2-3 कलर्स लो इनिशियली बिगिनर लेवल के, और कोई जरूरत नहीं है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट फर्श पे अगर हम रेजन करेंगे, हमारी टेबल पे करेंगे, रेजन गिरेगा, हार्ड हो जाएगा, हमारी टेबल खराब हो जाएगी. हमें चाहिए सिलिकॉन मैट. मत लो सिलिकॉन मैट. डू नॉट. सिलिकॉन मैट मतलब इट्स सो एक्सपेंसिव. सिलिकॉन मैट बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्लेन सिलिकॉन जो मोल्ड होता है ना हमारा सेम मटेरियल का. इट्स अ लॉन्ग मैट, वेरी एक्सपेंसिव. इनिशियली कोई जरूरत नहीं है सिलिकॉन मैट खरीदने की. कोई भी फर्श के ऊपर नीचे प्लास्टिक शीट होती है ना, चार्ट पेपर नहीं, प्लास्टिक की शीट बिछाओ. रेजन प्लास्टिक की शीट पर अगर गिरा भी ना, प्लास्टिक की शीट डायरेक्ट उठ जाएगी, फर्श पे नहीं जाएगा ना, आपकी टेबल पर जाएगा. 3 चीजें जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे ग्लव्स. बहुत इजीली पूरा का पूरा बॉक्स मिल जाता है 50 रुपीज तक का. सेकेंड चीज एप्रिन. एप्रिन नहीं लेना है, पुराने कपड़े पहनकर करो. बट पुराने कपड़े ही पहन रहे हो तो मेक श्योर यू वेयरिंग अ डबल लेयर. इन केस रेजन गिरे, इट डजंट हार्म योर स्किन. एप्रिन वैसे घर में होता है, नहीं होता, किसी भी पुराने कपड़े का चीज का बांध के फिर रेजन का काम करो. थर्ड थिंग, लाइटर, हीट गन, ब्लो टॉर्च. इसमें इन्वेस्ट नहीं करना ना. अगर 30 रुपए का लाइटर भी नहीं खरीदना है आपको, मत करो. 1 रुपए की माचिस की डिब्बी आती है, 1 रुपी मैच बॉक्स. यू कैन वेरी इजिली अफोर्ड इट. यू बर्न अ मैच स्टिक, rotate your matchstick, rotate your matchstick over your Resin Art. You're done with it. But one thing, if you don't want, don't invest. A lot of Resin artists don't use, but my personal opinion and my personal expenses, if you don't use this, half of your products for return पे आ जाएंगे. हमें एक्सचेंज दो. क्यों? जब हमारा रेजिन बन गया, हमने उस टाइम तो उसके ऊपर we've used lighter and heat gun and maybe matchstick. उस टाइम तो ऊपर वाला जो हमारा बबल्स है, हमने उसको पॉप अप कर दिया. we're done with it. But during the time of curing, जो due to atmosphere या हम अपने रेजिन आर्ट को कवर करते हैं, एयर कैप्चर हो गई. जो उसने वो एयर को कैप्चर करा, फिर जो क्योर होते हुए बबल्स आते हैं ना, वो नहीं आएंगे. किससे नहीं आएंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल.
किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाओगे यू विल गेट इट फॉर लाइक $60, दैट्स इट. इसमें इन्वेस्ट कर लो प्लीज, हाईली रिकमेंडेड. Now, biggest problem with raisin is raisin can never get dry in a cold place. What I personally do is December to Jan, I don't take orders. क्यों? क्योंकि वो रेजिन सूखेगा ही नहीं. कितनी कोशिश कर लो, 3-4 दिन भी अगर उसको सूखने के लिए रखोगे ना, what will happen is that it will get sticky. जो the upper part of your resin art, it will get sticky. If you put a finger like this over here, no matter how professionally you mix your resin, no matter how much you scrape the resin, for how long you mix your resin, whatever you do, your resin will end up being sticky in winters. Use a heater if you really want. Like you're getting so many orders, use a heater in your room, make a normal temperature. And this is especially for people living in North India. South India, West India, East India, no problem, because those places do not experience temperatures such as 4 degree, 10 degree. In North India we experience temperatures like, if you go into the upper areas like Himachal, if you're from Himachal Pradesh or you're from Kashmir, minus, temperature goes to minus. There's no point. You're literally wasting your own material. 2 महीने के लिए don't do anything. Post your content, reach बढ़ाओ अपने पेज की. Orders मत लो, लिख दो ऊपर, bio में लिख दो, not taking orders. Or set your temperature with a heater on a normal temperature कि at least room में आपका 28 to 35 degree temperature होना चाहिए for resin to dry. Very nice and useful session. Thank you, Mona. So make sure that you take care of that. And obviously flowers invest करना बहुत जरूरी है. Resin art में बहुत important है. Glitters and small things to put into resin, very reasonable. UV रेजन में इनिशियली अगर आप पेंडेंट से स्टार्ट कर रहे हो, फाइन, बाय यूवी रेजन. इनिशियली यूवी रेजन में इन्वेस्ट मत करना, यूवी लैम्प में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है. यूवी लैम्प इज वेरी रीजनेबल, यू कैन वेरी इजिली फाइंड इट ऑन Amazon फॉर लाइक 150 rupees. बट यूवी रेजन इज क्वाइट कॉस्टली. अगर आप पहले एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उस पर फोकस करना, यूवी रेजन पर. डू नॉट जम्प ऑन यूवी रेजन स्ट्रेट अवे. You might end up in loss. Might. Touch wood now, but you might. So these are some things that I wanted to tell you. Why? Because we've been learning how to use resin, how to make resin art, but till the time we aren't clear with these things, nothing would work. हमें पता ही नहीं है कि हमें जाके resin art लिए सामान क्या खरीदना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है. So yes, I hope you all remember the steps of how to make a resin art. Let's revise it once again. Pour the resin into 2:1 quantity, mix it well, scrape the resin from the sides, pour it in, mix any color you want, any sparkles, any glitters you want, put it into your resin, mix it very well, and then pour it into your mold. Use isopropyl spray. Either you make half layer of resin, put on the spray on half layer of resin, then put rest of the layer. Or else what you'll do is you'll first pop up your bubbles and then you'll spray this isopropyl spray. But make sure you do this. This will help you prevent bubbles while the resin art cures. Then use a lighter to pop up the bubbles. After, leave your resin art for 24 hours. Any extra sides, scrape it off. Buff your resin with any of the buffers. And for more creativity and for more finishing edging, use these resin markers on the edges the way we've done in this resin art. And you're done with it. So this was all for today's session. I know we didn't make anything, but this session was very important because obviously नहीं पता होगा कि लेना क्या है resin art, तो resin art कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते. And we'll make something very interesting. We'll use a lot of glitters in next session, and we'll make something very glittery and very jittery, something very beautiful. So that was all for today, and I'll catch you guys live on my next live on Visha.live. So bye for now, signing off.
Great. Thank you, Mona. Thank you, guys. And any doubts you guys have, we'll note them down and we'll have those doubts in our next session. Bye, guys.